ओके जी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 5। The rate of a change of a quantity. If you write down dy upon dx, this means the rate in change of a y with respect to change in x. Whereas in your physics, ds upon dt, from s you denote the rate in change of a distance, rate in change of a distance, to whom you denote with s, with respect to change in, from t you denote the time. And when you write down dy upon dx when x is equal to x1, it is called the rate in change of a y with respect to change in x at a point when x is equal to x1. Similarly, you have also done the questions when two variables are with respect to the another variable, when the two variable x and y with respect to the variable let's suppose we say time t, then dy upon dx is equal to dy upon dt divided with dx upon dt. Whereas make it sure that denominator is not equal to 0, because anything upon 0 is not defined. And you can write it down the x with respect to the variable t, y with respect to the variable t, now the simple first example from your NCERT. He asked the rate in change of the area of a circle per second, mean with respect to time, per second with respect to its radius. when को हम बाद में प्लॉट करेंगे, क्वेश्चन करते टाइम डिनोटिंग जरूर है कि लेट a be the area and r be the radius, and you know that the area of a circle is pi r square. This explanation is must compulsory. So according to the question, he asks you the rate in change of area with respect to the radius. That means he is asking for dA upon dr. The differentiation of r square is 2r, whereas the differentiation of r is 1. Now he asks the rate in change in area of a circle with respect to the radius, and the last point, when your r is
5 centimeters. So therefore pi into 2 into 5 is 10 pi centimeter. Exercise 6.1, the question number first. Rate in change of area of a circle with respect to its radius when r is equal to 3 centimeter. दोनों same question है. Answer with proper explanation. आप अपनी डिनोटिंग खुद से भी दे सकते हैं, पर डिनोटिंग देनी जरूरी है. नहीं. Let's suppose I show you. It depends from one part to another. See here in this book what he says. Let z denote the area of a circle and variable radius is r. So therefore this is z is equal to pi r square. Previous question में हमने area को a से लिखा, तो as you wish. Confirm answer यही आ रहे हैं. Example second, from your NCERT book, he says the volume of a cube is increasing at the rate of. Again, you have to give the denoting. Okay. Let V be the volume of a cube. With side x centimeter. So the volume of a cube is h cube. It is given to you in the question that the volume of a cube is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second. Per second mean with respect to the time, the rate in change in volume is 9 cubic centimeter per second is given to you. He asks how fast the surface area is increasing. So first of all, from equation first, you differentiate with respect to the time that dv upon dt, and the differentiation of x cube is, and then differentiation of, because you are differentiating with respect to time, dv upon dt is given to you. So therefore dx upon dt is 9 upon 3x square. Now his question is how fast the surface area is increasing. Let the surface area of a cube is denoted with S, and the surface area of a cube is 6h square. And he asks how fast it is increasing. So his rate in change with respect to the time is ds upon dt, right hand side में differentiation, and then the differentiation of a. Now he says that rate in change in surface area with respect to the time when the length of the edge, he particularly mentioned you, when the length of the edge is 10 centimeter.
So therefore, he is asking ds upon dt when x is equal to 10. So 6 into 2, in place of x, you substitute the value 10, and dx upon dt from equation second is 9 upon 3x square, whereas in place of this x, you again substitute x as a 10. Yes, the answer is answer unit. Yes, 3.6 surface area is centimeter square, and you are differentiating with respect to time. So this is 3.6 centimeter square per second. A similar question from your exercise 6.1, question number second. For you. Same unit change हुई है सिर्फ. Explanation should be there. V the volume, X be the edge or the side, and capital S be the surface area. But here the volume of a cube is increasing at the rate of. dV upon dt given है. And when you differentiate with respect to x, with respect to time, sorry. And the differentiation of x is dV upon dt is already given to you. Now he is asking how fast the surface area is increasing. So again you differentiate with respect to time, and differentiation of x is dx upon dt. So from equation first, ds upon dt is given to you 8 upon 3x square. Now he asks the rate in change in surface area when. Surface area centimeter square with respect to time is a second. NCERT example number third. When you drop a stone into a quiet lake, the wave moves. It moves in a circle. So when it moves in a circle,
you will see कि उसका रेडियस चेंज होता है और एरिया भी चेंज होगा as you drop a stone in it, and फिर आपका एरिया भी चेंज होगा. So when he says that stone is dropped into a quiet lake, a wave moves in a circle with the speed of, यूनिट से भी पता लग जाएगा, radius, right? So again, let A be the area of a circle with radius which is keep on changing, जैसे जैसे wave आगे जाएगी, r. So he says that the wave moves at the rate of dr upon dt is given to you 4 centimeter per second, whereas the area of the wave is pi r square. Now you read the question. In last, he says how fast the enclosing area is increasing. That means he is asking the rate in change in area with respect to time per second. So dA upon dt is pi, the differentiation of r square is 2r, and then the differentiation of the base. From equation first, dA upon dt is equal to 2 pi r, whereas dr upon dt is 4. And finally, आप उसके क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, he is asking it when the radius of a circular wave is when r is equal to 10 centimeters. So 4 to the 8 pi into 10. And this is area. Area is the unit centimeter square और किसके with respect to differentiation? Right. And the question number 5 from your NCERT exercise 6.1. Question number 3 from your NCERT exercise. And question number 4 also. The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of, and find the rate at which the area of a circle. Let A be the area of a circle of radius r. So according to the question, the radius is increasing. Read the unit, that is 3 centimeter per second. So therefore I write down dr upon dt. Area of a circle pi r square, and rate in area of a circle is increasing. So that means you differentiate with respect to. So dA upon dt, the differentiation of r square is 2r, and then the differentiation of a base. Now from equation first, dA upon dt
2 pi r dr upon dt is 3. Now he asks when the radius is. So therefore your answer, the rate in change in area with respect to the time when r is equal to 10 centimeter, it is 60 pi. It is a area you are differentiating with respect to time. So second. एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस था. यूनिट गिवन रहती है, जैसे यहाँ दिया रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्लियर हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पर भी दे रहा है द एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर, राइट. अगेन आपको लिखना पड़ेगा लेट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose edge is x सेंटीमीटर, और उसने दिया हुआ कि एज इज इंक्रीजिंग with respect to t because 3 centimeter per second. Now he asks how fast the volume of a cube is increasing. So again you have to differentiate with respect to time. So dv upon dt 3x square dx upon dt, but from equation first, the value of a dv upon dt, the value of dx upon dt is 3, so this is 9x square. Yes. And finally he says when the edge is so therefore he is asking dv upon dt when your edge is 10. 900 the volume you are differentiating with respect to time. यस जी, आप ही ने करना है इसे. अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिया है. Answers for this question: the perimeter is decreasing at the rate of 2 centimeter per second, and area is increasing at the rate of 2 centimeter per second. The same one. Next, example 5. Such a questions आपको 1 marks MCQ या फिर आपको 2 marks में मिल जाएंगे. क्वेश्चन को समझना जरूरी है. द टोटल कॉस्ट C of X. You know what does mean C of X? C mean the cost which depend upon X. C of X का meaning in rupee, which he mentioned himself to you by the equation which is already given to you. He asks find the marginal cost. Marginal cost प्रोडक्ट के ऊपर आएगी. प्रोडक्ट जितने सेल होंगे उतनी ज्यादा कॉस्टिंग खरीदने पे भी.
So therefore this is whole differentiation is with respect to x is 3x square. The differentiation of x square is 2x and the differentiation of x is 1, constant is 0. This x, he says, when this x, the product is 3 unit. Three square. Here you put x as a 3 plus 30. Because this is a cost, so therefore you can mention the unit as a rupee. Right. The similar example number 6. Yes, come on fast. R of x. What is x? Unit of the product. और बाद में वो unit आपको 5 बता भी रहा है. So therefore you differentiate. Differentiation of x square and differentiation of x constant as a 1, and he asks the rate with respect to at an instant when x is equal to 5. How much? Please mention rupees also with respect to the unit. Question number 15 from your NCERT and question number 16 also from your NCERT. Yes. The answer for the first one after differentiation is 20.97. अगर आप निकाल पाए स्क्रीन पे देख सकते हैं. एंड द सेकेंड वन जिसका आंसर बताया गया था 208. So therefore the answer for the second one is 208. यहाँ कंप्लीट. जो विद डायग्राम आप कह रहे थे जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो यहां से स्टार्ट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्फीयर के ऊपर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज a balloon which is always remain spherical is being inflated. Inflation का मतलब होता है उसमें हवा भरना, और ऐसा करने से आप उसके वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, और वो अपनी यूनिट में इसे बड़े अच्छे से मेंशन कर रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ही होता है. और जो आपका क्वेश्चन रहता है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू, तो वो भी वो अपने क्वेश्चन में साथ ही दे रहा है पर सेकेंड. सो प्लीज मेंशन let V be the volume of a balloon. Let V be the volume of a balloon. या बैलून नहीं लिखना तो आप अपना ज्योमेट्रिकल नाम दे दीजिए स्फीयर, क्योंकि सब कुछ रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है. सो विद रेडियस R, हाँ वेरिएबल रेडियस R बोल दीजिए. And he already given to you that this rating change in volume as usually मैंने per second जो आपको पढ़ाया तो 900 cubic centimeter या centimeter cube per second आपको वो given दे रहा है. And whereas the volume of a cube
4 राइट एंड dv अपॉन dt अब में है तो पता होगा किसके साथ डिफरेंशिएशन करनी है ओके जी सो dv अपॉन dt the differentiation of r cube is 3r square and then the differentiation of a right whereas from equation first it is given to you that dv upon dt is 900 3 से 3 cancel already this is 4 pi r square dr upon dt so you can get the value of a dr upon dt as a 900 upon 4 pi r square. Read the question. He says, find the rate at which the radius of a balloon is increasing. Of course, आप वही निकाल रहे हैं dr upon dt ही, लेकिन he also mentioned कब when your r is 15 centimeters. So dr कहाँ बचे क्यूब की डिफरेंशिएशन 3r स्केल हुई ना फिर so dr upon dt when r is equal to 15 900 upon 4 pi 15 स्केयर रेडियस की यूनिट आप तब पूछ भी रहे थे जी अब रेडियस की यूनिट क्या मेंशन करोगे सेंटीमीटर और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रही है राइट ओके जी 1 upon pi radius and with respect to time is second. क्वेश्चन नंबर 9 इतना ही पेज लीव कर दें इट इज इन योर होमवर्क द सेम क्वेश्चन आंसर इज इसमें यूनिट सेंटीमीटर क्यूब इसलिए है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग दिस इज रेट इन चेंज इन वॉल्यूम राइट जी आप इसे कर ही दीजिए प्लीज लेट्स सी क्या लिखते हो आई थिंक कर लिया होगा सोल्यूशन 400 pi why you are differentiating with respect to time नहीं ये तो क्वेश्चन आप मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करनी है तो आपने विद रिस्पेक्ट टू टी क्यों की विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ये आपको कैसे पता लगा हाँ जी इनमें से कईयों ने इसे शायद पढ़ा ही नहीं होगा with radius is given to you later mean at a instant किसी वक्त जब r 10 सेंटीमीटर होगा जो सबसे लास्ट में पुट हुआ जी ध्यान रखना जी क्वेश्चन रत्ती सा गलत पढ़ा गया तो उसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी पेपर में कि विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू t द नेक्स्ट वन लिख लिया होगा इसकी वेटेज भी क्वेश्चन की ज्यादा रहेगी स्केच कर लें तो ज्यादा अच्छा है लैडर लीनिंग बना लीजिए कितनी बनती है दो कंडीशंस हैं व्हेन यू पुट इट अलोंग द ग्राउंड ऑफ कोर्स जब आप इसे ग्राउंड लेवल पे पुल अप करेंगे तो आपकी हाइट डिक्रीज होगी
अगर आप इसे जमीन पे खींचते हैं पीछे तो। तो दो वेरिएबल यहाँ वर्कआउट कर रहे होंगे, जो हाइट इसकी डिक्रीज या इंक्रीज होगी, एंड जो आप बेस में से पुल करेंगे, दोनों को किसी ना किसी वेरिएबल से प्लॉट कर लीजिए, y एंड x, a, b एंड c, एंड द लेंथ ऑफ द लेडर 5 मीटर लॉन्ग। वन कंडीशन जो आपको बिना बताए यूज करनी है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। एक्सप्लेनेशन में पहले इसे ऐड कर दीजिए। AB is a ladder 5 meter long. Then BC x centimeter, AB y centimeter in a right triangle ABC by Pythagoras theorem. X square plus y square is equal to 5 square. क्या क्या गिवन दे रखा हुआ है वो आपको इसमें पढ़ना है। He says the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. This bottom is pulled along the ground away from the wall. So that means dx upon dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हाइट ऑफ कोर्स डिक्रीज रहेगी। यहां से आपको क्लियर भी रहेगा कि इसका आंसर आपके पास नेगेटिव आने वाला है। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, और वो वर्ड डिक्रीजिंग यूज भी कर रहा है। बिल्कुल जी करिए। डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू, यूनिट दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन होगी हो अगर तो first with power, then with base, again first with power, then with base equal to 0. And it is given to you that the foot of a ladder pulled along the ground, so 2x dx upon dt, and he asks you dy upon dt. So dy upon dt he says when the foot of the ladder is 4 meter away, when the foot of the ladder, it means he is going to say that when x is 4, but here you have a 2 variable, so put in equation first y variable भी चाहिए आपको। So x square plus y square is equal to 25, y is equal to 3. So therefore dy upon dt when x is equal to 4 and y is equal to 3 is minus 2 into 4 upon 3 is minus 8 upon 3. The unit is centimeter per second. That means the height of the ladder is decreasing
Answer: height of the ladder is decreasing at the rate of 8/3 centimeter per second. Question number 11 from your NCERT book. It may be in a MCQ or in a 2 marks weightage. He says the particle moves along this curve. Find the point on the curve at which. इसे रीड करिए which के आगे जो दिया हुआ. What does it mean? Changing का मतलब होता है rate in change. And the equation given to you is, so now you differentiate with respect to time. 6 dy upon dt, 3x square, the differentiation of x plus 0. Equation first से dy upon dt की वैल्यू चेंज कर दीजिए. x is equal to प्लस माइनस 4. आपने अगर क्वेश्चन को ठीक से रीड किया है तो वहां पे वर्ड आ रहा है पॉइंट. पॉइंट पूछा हुआ उसने. सो नाउ द टू केसेस अराइज. केस फर्स्ट and case second to find out the point when x is equal to 4. Then what is y? And the second case, the point when x is equal to minus 4, to write down the point, then what is y coordinate? Substitute the value and you will get the answer. So when x is 4, the y is 11. And when x is minus 4, this all जो आप करेंगे वो आपकी कैलकुलेशन है जी, -31/3. This question may be as a MCQ or maybe in a 2 marks weightage. This is the another similar one having a weightage of 1 or 2 marks. क्या गिवन है 12th में आपके पास? Radius of an air balloon is increasing. Radius r is increasing with respect to time है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड. At what rate the volume of the bubble is increasing? 4/3 pi r cube. And when you differentiate it with respect to the time, the differentiation is 3r square and the differentiation of r is dr upon dt. So from first dr upon dt, 4 pi r square is 1/2. And then he asked the rate in change in volume when your r is equal to 1. So 4 pi r1 square upon 2. So therefore the rate in change in volume is in centimeter cube per second. Now the similar one is again a question having a weightage of 1 or 2 marks from your NCERT. एक मिनट.
A balloon which always remains spherical has a variable diameter this. So radius three upon 4 2x plus 1. The volume 4 upon 3 pi cube. 3 cube 3 क्यूब पता हो तो नहीं पता, चलिए बाद में पता कर लेना अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी। अच्छा, v इज इक्वल टू पाई 3 स्क्वायर 9 16 2x प्लस 1 होल क्यूब। Rate in change in volume with respect to x, so therefore you have to differentiate it with respect to x. 9 pi upon 16, first the differentiation of a power and then the differentiation of a base. 27 pi upon 16 2x plus 1 whole square, यहां आ जाएगी 2, कैंसिल कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगी 15, फिर गलत बोली जा रही है जी। 27 pi to 8 the 16 2x plus 1 whole square. Sir, code is here. Sir, calculation code. Next and the important one. वॉल्यूम किसी पाइप से जब सैंड को और एक कोन फॉर्मेशन हो रही है तो सैंड जब फॉल होती है तो वो वॉल्यूम फॉल हो रहा होता है, और उसने मेंशन भी किया हुआ उसे विद रिस्पेक्ट टू यूनिट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक्सप्लेनेशन में आप उसे लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ अ सैंड to whom we denoted by P, whereas X is a radius and Y is the height. आप H और R रखना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। The volume of a cone to whom we denoted with V, क्योंकि वो सैंड से बना है तो ये आ जाएगा 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे गो थ्रू करना है, दैट हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। लेकिन किस यूनिट को आपने अपने पास बनाए रखना है ये इस बात पे तय होता है कि आपसे पूछा क्या गया है, क्योंकि उसने हाइट तो बोल दी कि 1/6 ऑफ द रेडियस, y इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द x, बट किस वेरिएबल को आपने अपने पास रखना है वो यहां से तय करिए कि हाउ फास्ट द, यहां से आप डिसाइड करिए कि आपको किस वेरिएबल को रखना चाहिए, h, बिकॉज आपका क्वेश्चन है dh अपॉन dt या आप कहिए dy अपॉन dt। तो इफ यू वांट टू कीप द y, सो दैट इज व्हाई यू रिप्लेस x विद 6y। नाउ इक्वेशन फर्स्ट फिर से मॉडिफाई, 1/3 पाई x की जगह पे यू रिप्लेस, so therefore volume is 1/3 6/3 pi cube. Now the rate in change in volume is already given to you, so therefore you differentiate both sides with respect to the time. Three y square dy upon dt, whereas आप उसे मेंशन करके दीजिए कि dv अपॉन dt आपको ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, जो है ये आपके पास ऑलरेडी एक गिवन वैल्यू है। सो dv अपॉन dt 12 6 pi y square dy upon dt, and he asks you dy upon dt which is 12 upon 6 pi y square.
and he mentioned (36). This is 12. This is 12. So 12 and 12. And he says when the height is 4 centimeter is given to you. So therefore dy upon dt when y is equal to 4, 1 upon pi 1 upon 16, कहीं गलती है अभी भी, कहाँ गलत हो रही है, 48 है ये, कहाँ गलत की कैलकुलेशन, ओके यहाँ पे 3 रह गया, सॉरी, इंटू 3 रह गया ये, दिस वन, तो ये हो गया 1 upon 48 pi centimeter per second. NCERT क्वेश्चन नंबर 17 and 18 आप घर से करेंगे जी. Now the question from your NCERT exemplar. The question is from your NCERT exemplar. Curve is given to you. The x is increasing at the rate of 2 unit per second. So therefore I write it down dx upon dt. How fast the slope of the curve changing? You know what is the slope of the curve? dy upon dx. Differentiation जो आप करते हैं, slope of the curve जो है वो आपको पता होनी चाहिए. That is dy upon dx. Now the equation is given to you, and for the slope of the curve 5 and this is 3x square. ये given है. कितनी आई थी dy upon dx? 5 minus 6x square. अब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना जी. इधर स्क्रीन पे आपने यहां से पढ़ा कि हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग. फिर से दिखाता हूं, ये स्लोप है. हाउ फास्ट, रीड द क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द कर्व इज changing, mean how fast slope m which is changing is d upon dt of किसका, right, slope mean dy upon dx. तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन x स्क्वायर की and dx upon dt minus 12x dx upon dt 2 is minus 24x. This is a rate in change in a slope, and rate in change in a slope when your x is 3. So it is मेंशन कर देना जी कि जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है. ये वर्डिंग में लिखना आपके लिए कंपलसरी है. नहीं बच्चे, पहले नहीं था. स्लोप क्या होती है +1 में? वाइड. आपको अगर कंफ्यूजन है तो स्लोप tan theta, if the 2 points are given to you, then slope is, so basically this is delta y upon delta x, so that means slope is dy upon dx. पहले स्लोप तो निकालिए आप, तब तो उसका रेट इन चेंज आप निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
अगर आप उसे निकालेंगे तभी आपके पास वो रिजल्टेंट में रहेगा। हाँ जी, स्लोप पहले, हाँ जी। एक इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी एग्जाम्पल से देखेंगे आप काफी जगह पे। फाइंड द एंगल थीटा, इधर फाइंड द एंगल थीटा which increases twice as fast as its sine। बता सकते हैं व्हाट डज इट मीन? डी थीटा अपॉन डी टी, टू एज फास्ट एज साइन, ट्वाइस एज फास्ट एज साइन, ट्वाइस एज फास्ट एज साइन। तो ठीक है, तो ये भी बता दीजिए कि साइन की डिफरेंशिएशन, साइन की डिफरेंशिएशन, then do not forget to do the differentiation of theta. So cos theta is equal to, and theta is equal to 60, yes।